where we are told that the Municipal Corporation of Faridabad has started the demolition of structures in what is called the Khori village, and approximately 150 houses there have been demolished. In fact, look at these pictures which have just come in of how the demolition of that entire place is taking place. These are drone pictures giving you a sense of how not one or two or a dozen houses, 150 houses there being brought down with the use of those JCBs over there and this is all happening, and you can see people still surrounding, still inside those houses in some of them. Let's go across to Akshay Dongre, bringing us up to speed with all of that. Akshay, can you tell us why this demolition drive is actually taking place and how many lives does this actually impact? Well, approximately 1 lakh people reside here in the Khori village, which is in Faridabad area of Haryana. As far as the lives impacted are concerned, then all of the lives are impacted of the people who were living here. Approximately more information is coming in right now. There are approximately 400 to 500 houses were demolished today, and these are all the remnants of those houses that were demolished. So the situation is extremely tense here. People are very disappointed. They have spent their livelihood, they have spent their lifetime saving here as far as these houses are concerned, and now they are left with nothing. And even though the Haryana government is claiming that they will be, the government will be providing some kind of respite to these people, but so far nothing is in sight, and especially in this monsoon season, people are left without no roof over their head. We'll try and speak to some of the people and try to understand that what exactly are they going through. एक बात बताइएगा, कहाँ पे घर था आपका? यहाँ। आपका घर कहाँ है यहाँ? यहाँ खोरी में ही है बेटा। अभी क्या आपका भी घर तोड़ दिया गया अभी तक? अभी नहीं टूटा है। और यहाँ पे कितने लोगों का घर तकरीबन तोड़ा गया होगा आज? कम से कम लग रहा है 2-4-5 हजार। 400-500 घर तोड़े गए हैं यहाँ पर लोग बता रहे हैं। भैया आप बताइएगा यहाँ पर कितने लोग रहते हैं तकरीबन पूरे खोरी के बात करें? कम से कम यहाँ भाई सब 30,000 घर होंगे इस इलाके में। इस इलाके में और 30 अगर एक बार सर्वे करा ले गवर्नमेंट तो पता चल जाएगी। कोई सर्वे भी नहीं, सर्वे तो करवा नहीं रहे हैं। सीधा कर रहे हैं 10,000, कभी कर रहे हैं 6,000 और इस तरह के तोड़ करके लोगों को एकदम गुमराह किया जा रहा है, हवाई फायर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर एक बार सर्वे हो जाए तो यहाँ कम से कम 30,000 प्लस घर निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे। अच्छा, we'll speak to some of more people who have lost their houses here. दीदी आप बताइएगा यहाँ पर क्या आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ, उधर ही तोड़ा गया है। तोड़ दिया तो आप बारिश हो रही है इस वक्त, कुछ जाने की जगह कहीं आपके पास? कहीं नहीं है, यहीं भीग के रहेंगे। यही रहेंगे? बच्चे हाँ, भी है? छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हम लोग 15-16 साल से रह रहे हैं। तो उस वक्त कोई नहीं आया था जब आप घर कोई बना नहीं रहे आया थे? था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आता था। सिर्फ बनाने के टाइम आते थे, पैसे लेके चले जाते थे। हाँ। 35 साल हो गया हम लोगों को, 35 साल से आज तक कोई नहीं आया। खाली मलबा भरो, गड्ढा भर भर के, मलबा भर भर के हम लोग रहे, ईंटा पर ईंटा जोर जोर के रहे भैया। बच्चे बीमारी, पेट में रोटी नहीं खा के ईंट जोर जोर के रह रहे हैं। अब फिर भी इतना दिन से सरकार को दिखे नहीं। अब सरकार जब सब कुछ कर ली, पब्लिक सब कुछ कर लिया, तो आज सबको दिख रहा है कि ये तोड़ा जाए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये बारिश में, कहाँ जाएंगे ऐसा मौसम में? कोरोना आ रहा है, बच्चे सब बीमारी, उसको इलाज का पैसे नहीं हो रहा है, कैसे क्या करेंगे? तो घबराहट है आपके मन में कि घर तोड़ दिए जाएंगे यहाँ पे जब पूरे इलाके की? तो आपका ये जब इतना तोड़ रहा है तो अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे सरकार, अब सरकार जाने। Well, Sonal, as far as the information is concerned, approximately 400 to 500 houses were demolished today. In this particular area, there are around 10,000 constructions in the Khori village, and according to the Supreme Court, as far as the entire demolition drive is concerned, it has to be completed as far as the Haryana government's ultimatum is concerned by 18th of July. So the situation is extremely tense because the authorities who came here to demolish have for time being gone back, but they have said that in the next 5 days, all the houses as far as the Khori village is concerned, they will be demolished. So approximately 1 lakh people will be rendered homeless, and no alternative measures have been taken by the government to provide a roof to these people as far as this monsoon season is concerned.
All right, very troubling to see what is happening over there, Akshay, and especially when the government has not provided any alternate or a relocation strategy for these over 1 lakh people, as you're reporting, and so many of them, you rightly said, in this monsoon season, to be left without a roof over their head is extremely troubling. We'll come back to you for more on that.